uh, what we picked up was non-uniform circular motion, students. Okay, वहाँ पे I told you about velocity का formula, students. If you recollect, मैंने tension at any instantaneous position मैंने बताया था, students. Okay, then I told you okay, Bhairavi, fine, doesn't matter. Okay, when I asked her about major test, nobody replied, but Bhairavi, she replied it. Good, Bhairavi, thanks. The rest of them, it seems they are not at all interested. You know? Okay. Okay, students. I told you about velocity का formula, students. मैंने tension at any instantaneous position भी बोला. अगर तुम्हें ध्यान से मालूम हो, students, तो I made it very clear. Then I told you about a convex bridge and a concave bridge, students. If in case if I happen to consider, okay, students, for a body lying outside the curve or inside the curve, the body should hold the surface in that case. So students, the velocity, maximum velocity at the topmost position is under root gr. For one complete cycle, students, मैंने बताया था, it will be under root 5 gr. Okay. And the total mechanical energy remains constant, 5/2 mgr, students. That was, we did it for vertical circular motion, students. Okay. Now, students, it's only two mathematical relations which you need to take care of it. एक है तुम्हारा, students, can you give me a mathematical relation for critical or orbital velocity? For example, if I speak about, students, listen carefully. Is moon a satellite of Earth? Students? Is moon a satellite of Earth, students? को बता सकता है? Students? Is moon a satellite of Earth? Shyam says it yes. Shyam, unmute करके बोलो ना. Johnson. Yes, anybody else? Bhairavi also saying it yes. Absolutely correct. Since moon is a natural satellite of the Earth. Moon क्या है? Natural satellite of the Earth. Students, ये ध्यान में रखना. Okay. लेकिन क्या artificial satellite भी launch होती है? Students? Of course. बहुत सारी satellites launch हुई है from India. And after the governance of Modi from 2014 onwards, students, India has come up very strongly in astrophysics. We consider celestial objects के बारे में, okay, spaceship के बारे में, outer space के बारे में. Are getting it? So वहाँ पे भी students, now we have conquered a lot of achievements over there also. Students, India was the one who has launched 100 satellites at one time. छोटे-छोटे satellites. Okay, लेकिन एक साथ में 100 satellites को launch किया गया है, students, in that particular orbit. We have that particular record of doing it. We are actually doing it for other nations also. तो students, ये launching of satellites है, तो वहाँ पे जो satellites revolve होती है या moon revolve होता है, it revolves around the earth performing what kind of motion? क्या ये motion non-uniform है या uniform है, students? तो बता सकता है? Is it non-uniform circular motion or uniform circular motion? Students? Anybody? Students? Satellites जो revolve होते हैं around the earth या moon जो revolve होता है around the earth, is it UCM या non-UCM, students? Yes, Alia. Yash, is it uniform? Absolutely correct. Uniform circular motion है. तो अगर किसी ने तुम्हें पूछा, students, can you give me the formula for the velocity of a satellite revolving around the earth? So students, listen carefully. This is what the earth I'll consider. Agreed. ये जो satellite है, it is revolving around the earth. And since its speed remains constant, students, इसका speed हमेशा constant है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा linear speed v, and that is constant, students. तो ये कौन सा motion है? ये हो जाएगा uniform circular motion. Agreed? अब मुझे बताओ uniform circular motion के लिए तुम्हें कौन सा force चाहिए? Students, which force is required for the body to perform uniform circular motion? Anyone? क्योंकि अभी problem शुरू करना है, students.
ये दो formulas I'm trying to give it to you, and then we'll go to the numericals fast. Yes, students, can you tell me which force is required? Absolutely correct. Centripetal का direction किस तरफ होगा, students? What is the direction of centripetal force? Students? Inwards. Towards the center. Yes, it's towards the center. Students, ये towards the center होगा, तो ये force centripetal है ना? और ये हुआ तुम्हारा पोजीशन वेक्टर जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन दिखाता है ना। ये फोर्स सेंट्रीपिटल की वजह से क्या होगा, सैटेलाइट परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स सेंट्रीपिटल है, फोर्स सेंट्रीपिटल इज प्रोवाइडेड, कैन यू टेल मी बाय होम? स्टूडेंट्स, force centripetal is provided by whom? Can you tell me that? ये जो फोर्स सेंट्रीपिटल है, यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है फोर्स सेंट्रीपिटल? सैटेलाइट अगर रिवॉल्व करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक रेडियली इनवर्ट फोर्स है। हाँ श्याम एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन अर्थ का मतलब है देयर शुड बी सम फोर्स ना। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है, तो रियल फोर्स कौन सा होना चाहिए? या तो कांटेक्ट होगा या नॉन कांटेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, या तो कांटेक्ट होगा या नॉन कांटेक्ट होगा। यहाँ पे कौन सा फोर्स है, बता सकते हो? एब्सोल्युटली करेक्ट यश, it is provided by gravitational force of the earth. आज क्या है, today the guys are really doing well. Today the girls are not smarter, guys are more smarter than girls today. Very good guys. तो यहाँ पे क्या है, centripetal force यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो centripetal force प्रोवाइड कर रहा है gravitational force of the earth. फॉर्मूला फॉर centripetal force कौन सा है? अगर मैंने पूछा I want to find out the velocity, ये जो velocity है कौन सी velocity है? VO. ये VO क्या है? Orbital velocity. कौन सी velocity? I want to find out, students, orbital velocity of a satellite performing circular motion, uniform circular motion. So students, your force centripetal is provided by force of gravitation. Your force centripetal is given by what formula? mv square by r. R क्या है students? R exactly is what? Distance of the center of the earth from the center of the satellite. Students, ये ध्यान में रखना. Students, ये R है, ये orbital radius है, ये ध्यान में रखना. What does R stands for? वापस students, ये earth ये है. Students, think as if this is the earth. ये center of the earth है. तो अगर ये earth है और ये center है, तो यहाँ से ये होगा capital R radius of the earth. और जो भी satellites launch होती है ना students, ध्यान से देखना students, जो भी satellites launch होती है, they are launched at a certain height from the surface of the earth. Students, and all the satellites are launched in what plane? This is north, south, this is west, and this is east. They are all launched in equatorial plane. Students, all these satellites are launched in what plane? Equatorial plane. Performing what kind of motion? Uniform circular motion. This is how the satellite is revolving, students. सैटेलाइट जो रिवॉल्व होते हैं वो सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, ये परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? आर क्या हो जाएगा? कैन यू व्हाट इज स्मॉल आर? तो मुझे स्मॉल आर का मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा. और हाइट, कौन सा हाइट पे तुमने बॉडी को लॉन्च किया, सैटेलाइट को लॉन्च किया? स्टूडेंट्स, ये एक डेफिनेट हाइट होती है, मालूम है स्टूडेंट्स? जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च होती है, दे आर लॉन्च्ड एट अ हाइट ऑफ 35,940 किलोमीटर्स surface of the earth. Students, 35,940 kilometers. Radius of the earth is 6,400. Students, अगर approximation इसको 36,000 लेता हूँ, center से 6,400 लेता हूँ, तो students approximately it will be 42,400 kilometers. तो समझ में आता है? Students सुन रहे हो ना? देखो सैटेलाइट्स क्या हाइट पे भेजा गया है. वो कौन सा ऑर्बिट है? ये जो ऑर्बिट मैंने बताया, ये है जियोसिंक्रोनाइज ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पार्किंग ऑर्बिट.
या ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ। स्टूडेंट जैसे जैसे तुम्हारे बिल्डिंग के अंदर तुम जहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस में रहते हो या बिल्डिंग में रहते हो या आसपास में, तो वहाँ पे सारे पार्क होते हैं, गाड़ियाँ अपनी पार्किंग लॉट में पार्क होती है ना। शायद तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में या बिल्डिंग में सारों का पार्किंग एरिया बना के दिया हुआ रहेगा, है ना। और सामने ऐसा नंबर लिखा होगा कि ये फ्लैट नंबर का ये गाड़ी यहीं पार्क होगा, तो दैट्स अ पार्किंग लेन भी कंसिडर। किसी और की गाड़ी को तुम वहां पार्क नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वैसे ही स्टूडेंट्स ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अंदर सारे सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, हर एक को अपना अपना एक पार्किंग स्लॉट दिया जाता है उस ऑर्बिट के अंदर। क्योंकि स्टूडेंट्स इट्स अर्थ, so many nations, students, so many nations, almost all nations are trying to build up their own space station, almost all for defense of a weather forecast। तो सब अपनी अपनी सैटेलाइट्स छोड़ रहे हैं वहां पे। जिसके पास में फंडिंग ज्यादा नहीं होता है लेकिन वो कर नहीं सकते, तो वो इंडिया को बोलते भाई हमारे लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करो हमारे हमारे पोजीशन के सामने। और इंडिया कमा रही है, नासा भी वही करती है। तो स्टूडेंट्स वहां से सैटेलाइट सारे लॉन्च हो रहे हैं और दे आर लॉन्च। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये ऑर्बिटल वेलोसिटी स्टूडेंट्स। ये जो v0 वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये है ऑर्बिटल रेडियस, ये है मास ऑफ द सैटेलाइट। अगर मैंने इसको सन ले लिया होता ना स्टूडेंट्स, SU एंड सन, तो ये अर्थ बन जाता। अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। We are trying to find out an expression for orbital velocity, or so called as your critical velocity. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। Yes, sir. Yes, is understanding. Yeah. What about the rest of the students? What are the rest? Why the rest of the students are zipped? रविकांत समझ में आ रहा है? रविकांत, रविकांत भाई, are you there? रविकांत, ध्रुव, आलिया, आलिया, you never speak. Who's this Kajal Singh? A new student. Kajal Singh, which branch are you from? Kajal Singh, you're from which branch? सर मेरा रोल। Okay, fine. तो तुम्हारा रोल नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है भैया। सर रोल नंबर नहीं मिला है मुझे। Okay, no problem, no problem. समझ में आ रहा है तुम्हें जो सिखा रहा हूँ? यस सर। अच्छा, कुछ भी होगा तो पूछना, ओके? ठीक है ठीक है। आप अनम्यूट करना और पूछो, ओके? घर पे भी ठीक है मम्मा सर। मम्मा को सबको पता होना चाहिए कि नहीं तुम पढ़ रहे हो, अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, ओके? And what about Dishant? Dishant, you are not there in the lectures. Dishant, you are not there in the lectures. Dishant, Dishant, it seems you are not in lectures. Reply. ये कशिश है? कशिश रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? And Kashish, where is your friend Lavdi? Lavdi is also not there. क्या हो गया? Kashish, Kashish, are you there in lecture? No, she is not there. Kashish is not there in the lecture. Kashish, are you there in lecture or not? There. Why aren't you replying? Sir, actually my mic, when I'm clicking on the mic, it is coming that the host is not, so my mobile got hanged, so I left the meeting and then now joined again. And why Lavdi is absent today? So Lavdi has some issues at his family matter, can't say. Issues? She said she's not feeling well. That's what she said. No, sir, means she will not tell in like everyone, so she tell that she is not feeling well, but some family matter. Okay, fine. Sir, today also I'm not able to answer much because the rituals of my house will go till 10th. So after 10th only I can reply very frequently. What? Sir, today also I can't reply much as some rituals are remaining in my house.
Oh my God, so many ritual. शादी Sir, कब हो गई? it's till 10th of Feb. So after 10th, I will able to answer frequently. यार ये तो बहुत. Whatever it is, whatever it's your call, your parents' call. Can't help it. Okay, students, now come back. Okay, students, so I was speaking about the force centripetal is mv square by r. और यहाँ पे gravitational force क्या आएगा, students? Gravitational force is g. Mass of the Earth is capital M. Mass of the satellite is small m. Okay. Upon square of the distance r plus h, which is equal to small r. So this is r square. Students, ये gravitational force का formula ये तुम लोगों ने पहले पढ़ा है, लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है. Gm1 m2 upon r square. तो वही मैंने फॉर्मूला डाल दिया. अभी किसने पूछा कैन यू गिव द ऑर्बिटल फॉर्म और वेलोसिटी? यस, ये r कैंसिल हो जाता है. ये देखो मास ऑफ द बॉडी गेट्स कैंसिल. सो कैन यू से व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी आल्सो, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट gm by small r, where g is universal gravitational constant. Universal gravitational कांस्टेंट. स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, ये कांस्टेंट है. इसकी मैग्नीट्यूड है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स. एग्रीड? ये है तुम्हारा ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वी कंसीडर. जी. कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ वी कंसीडर, एंड आर इज अ ऑर्बिटल रेडियस. होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स. क्लियर हुआ डेरिवेशन स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या डेरिवेशन क्लियर? अगर कभी किसी ने पूछा कि अर्थ रिवॉल्व होता है सन के अराउंड, ध्यान से सुनना, अर्थ रिवॉल्व होता है सन के अराउंड, तो क्या वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है? तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा? स्टूडेंट्स ये क्या मैंने निकाला मालूम है? तुम लोग ने पढ़ा है ना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर अनबैंक्ड रोड? अंडर रूट म्यू आर जी. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर बैंक्ड रोड नॉट कंसीडरिंग फ्रिक्शन? अंडर रूट आर जी tan theta. What is the formula for velocity of a car, maximum velocity of a car on a bank road considering friction? Under root rg into bracket tan theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta. Vice versa for minimum. What is the formula for tangential velocity of a conical pendulum? V is equal to under root rg tan theta. Theta is with the vertical. Banking के अंदर theta is with the horizontal. What is the velocity of a cyclist, motorbike, or a cyclist on a circular road we consider is? Again, V is equal to under root rg tan theta, where theta is with the vertical. What is the instantaneous velocity for a particle performing vertical circular motion? So V is equal to under root u square minus 2gl in bracket 1 minus cos theta. Students, ये सारे formulas हम लोग ने derive किए हैं. Students, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को? हाँ सर. हाँ? तो वैसे ही मैंने ये पूछा, अगर सपोज ये मैं अर्थ लेता हूँ और इसको मैंने सन लिया है, तो यहाँ पे किसका मास आएगा? मास ऑफ सन आएगा. अगर मैं इसको मून लेता हूँ, इसको अर्थ लेता हूँ, तो यहाँ पे m किसका है? अर्थ का आएगा. मून का मास तो कैंसिल हो रहा है, देखो ना. यानी स्टूडेंट्स जो भी रिवॉल्विंग बॉडी है ना, उसका मास नहीं आता है. तो अगर किसी ने पूछा डू ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टू द मास ऑफ द रिवॉल्विंग बॉडी, so orbital velocity is independent of mass of revolving body. Is independent of mass of revolving body. क्या ये clear है students? Yes sir. Okay. So under GM by R is inverse proportional to R we consider. यानी जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस आ जाएगा यहाँ पे. And what is mass of nucleus? Is mass of protons and mass of neutrons collecting, यानी atomic mass number. तुम्हें शायद number of nucleons देंगे and mass of a nucleon will give it to you, या number of protons neutrons, total mass यहाँ पे आ जाएगा. समझ में आ रहा? और ये ऑर्बिटल रेडियस हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में या सेकंड स्टेट में या थर्ड में, यू कैन फाइंड द वेलोसिटी अकॉर्डिंगली. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स?
लेकिन वो तुम्हारा कौन सा फोर्स, यहाँ पे जी नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जी नहीं आएगा। अगर मैंने न्यूक्लियस लिया इलेक्ट्रॉन लिया तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स आएगा, वहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं आएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स आएगा स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लूँ ना, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसको न्यूक्लियस ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फोर्स सेंट्रीपिटल इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्लीज डू टेक केयर व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अराउंड टू न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ग्रेविटेशन के हिसाब से स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E square upon R square, where E is the charge on nucleus and the electron, and R is a distance between them. Hope this part is clear to all of you. और ये तुम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, ये पार्ट कहाँ पे पढ़ रहे हो तुम लोग, पता है किसी को, पता है ये कहाँ पे पढ़ रहे हो तुम लोग? हाँ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस और ये फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है? 11th standard initially structure of atom, Bohr's first postulate. स्टूडेंट्स मुझे बताओ, क्या बोर्स के फर्स्ट पॉस्टुलेट, सेकंड पॉस्टुलेट, थर्ड पॉस्टुलेट पढ़े हो कि नहीं पढ़े? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. बोर फॉर हाइड्रोजन एटम केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ओनली वन पर्सन इज सेइंग इज यस, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ देम? स्टूडेंट्स बोर्स पॉस्टुलेट्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ओनली अशर said yes, what about rest of them? No, sir, not yet. Not yet. स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं हुआ रिया? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। अरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो तुम्हारा सेकंड एंड थर्ड चैप्टर ही है ना केमिस्ट्री में। हो गया है सर। सर हो गया, बट मुझे सियाराम सर ने मतलब लाइन वाइज बोला है वीडियोस लेक्चर्स देखने, तो मैं उसी हिसाब से जा रही हूँ। तो तुमने नहीं देखा तुम, लेकिन ये बताया है ना तुम्हें, सर ने हाँ बताया। हाँ बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट, तो वहां पे भी तुम्हारा सेंटर ये शायद सर ने बोला होगा, तुम लोग सर्कुलर मोशन में ही किए होंगे, ये सर ने बोला होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में नाम दिया होगा सर ने। वो तुरंत बोलेंगे कि फिजिक्स में तुम लोग ने पढ़ा है, और तुम लोग ने तभी भी बोला होगा हम लोग ने फिजिक्स में नहीं पढ़ा है ना। केमिस्ट्री वाला पूछेगा तो बोलेगा फिजिक्स में नहीं पढ़ा, और फिजिक्स वाला पूछेगा तो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा, है ना। लेकिन वो बात सही है कि शायद स्ट्रक्चर ऑफ एटम हुआ होगा तभी सर्कुलर मोशन नहीं हुआ था हमारा, दैट इज अबाउट ऑब्वियस। लेकिन ये अभी ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट दीस थिंग्स, ओके। क्या ये पूरा मैटर क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। ओके फाइन, कैन आई इरेज इट? इरेज कर दो। यस सही है। Okay. Okay, students. There is one more relation which I need to speak about. Students, when you happen to refer to the models also, they must have given you the formula for students. ये ध्यान में रखना। अगर मैंने बताया इसका ये कहाँ के आंसर होंगे students? It's normally gravitational acceleration at certain latitude. Gravitational acceleration at a certain latitude, students. हमें वो वाला concept अभी मैं बता रहा हूँ students. मुझे बताओ students, सबसे पहले latitude का मतलब क्या, तुम बता सकते हो? Students, what do you mean by the term latitude? कोई बता सकता है students? Hey students, are you there? ये सो गए सारे? यस सर। हाँ, निशांत को बोला गया था है सर रिमूव हिम नाउ। सर latitude is like opposite point on certain angle on like
latitude is actually, see the horizontal lines on the earth are called as latitude. When you look at the geography part of it, topos के अंदर या geographical axis Yes, के sir. हिसाब से the horizontal lines are called as latitudes and vertical are called as longitude. The lines which moves to connects east and west are called latitudes and north to south are called longitudes. So latitude का मतलब क्या है? Any plane which is parallel to equatorial plane is called a certain latitude. Yeah, the angle formed by any place on the earth's surface with the center of the earth and it forms an angle with the equator is called at a certain latitude. अभी देखो उसका डायग्राम मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स. अगर तुम अर्थ को देखोगे ना स्टूडेंट्स तो अर्थ एक जियोइड शेप है. क्या है? जियोइड. या you can say it is spheroidal. Can you tell me what exactly geoid or spheroidal students? Students, do you know what exactly geoid or spheroidal students? Students, उसका मतलब क्या है? It is bulge at equator and it is flattened at poles. ये है तुम्हारा equator students और ये होगा poles. This horizontal line which is parallel to the equator, I can call it at a certain latitude. ये देखो ये line parallel है to the equator. ये center of the earth. Agreed? Yes. So students, now keep in mind, suppose अगर मैंने कोई भी एक place लिया, if I have taken any place on the earth's surface, students, this is any place on the earth's surface. ध्यान से सुनना, the line joining the place with the center of the earth, the line joining the place with the center of the earth measured with the equator is called at a certain latitude. क्या ये clear हुआ? Agreed? Yes, sir. तो ये है तुम्हारा at a certain. अब मुझे find out करना है what is the gravitational acceleration at a certain latitude. इसका formula है. Simple, तुम्हें सिर्फ formula रन करना है students. अगर किसी ने पूछा what is the gravitational acceleration at a certain latitude, g at a lambda, students, g lambda is given by the formula g minus r omega square cos square lambda. What does r over here stands for? Students, r over here stands for the orbital radius. ये क्या है तुम्हारा? Orbital radius, capital R from the center. ओमेगा क्या है? ये तुम्हारा नॉर्थ है. This is north and this is south. Omega is the angular velocity with which the earth rotates. The angular velocity of the earth rotating about its own axis is 7.26 into 10 raised to minus 5 radian per second. Students, can anybody tell me ये value मुझे कहाँ से मिली? Can anybody find out this value? Anyone? Omega of the earth rotating about its own axis is 7.26 into 10 raised to minus 5 radian per second. ये कहाँ से आया? Kashish, are you there, Kashish? Are you sleeping, Kashish? I'm there, sir. I'm there. Okay. Or you can tell your friend, no need to miss out lectures, at least lectures she can attend in that case. An So I answer. have told her, but Okay. she's not attending only. None of the lectures. लेकिन miss हो रहा है ना, पढ़ाई miss हो रहा है. It sounds good. And even you also not answering because she's not there. No, so not like that. Actually, I'm very. Okay, fine. Yash, what about you, Yash? Tejas? Sham? Sania? There are two Sakshi, one Sakshi from TP Bhatia. Ravikant, Prachi, Paneri, Akshanda, please answer. Om, Mayank. तुम्हारे साथ में स्टूडेंट्स मेरी एक पेरेंट्स मीटिंग होनी जरूरी है यार. आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स. एक दफा मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के सामने आना है, तुम्हारे सामने, और तुम भी साथ में होने चाहिए. तो मैं सबका नाम के साथ में मैं सब कुछ बोलूंगा मैं उस टाइम पे क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में. Really, I want everything to be told to your parents कि how are the kids are doing.
There are students who are literally not at all attentive. यानी कुछ बोलते ही नहीं है. जैसे दिलशा है, ध्रुव है, at times भैरवी आंसर्स, आलिया है, अंशु है, जानवी है, काजल है, कृषित है, मयंक है, ओम है, पानेरी है, प्राची है, रक्षंदा है. These are the people who don't. Sakshi from Mira Road, Vishal is there. These people, they don't reply and no respond. Hardly मुझे वो देखो ना, मुझे सिर्फ 5 या 6 जन का ही मुझे रिप्लाई आता है. 4 या 5 ही. Which is wrong, students. तुम्हारा नुकसान हो रहा है पढ़ाई का. थोड़ा समझो. सेल्फिश बनो अपनी पढ़ाई के बारे में, students. Okay. स्टूडेंट्स, अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि ये ओमेगा का अर्थ का, ओमेगा ऑफ द अर्थ कहाँ से मिला, स्टूडेंट्स, अगर तुम थोड़े से भी सेंसिबल होते, थोड़े से भी वाइज होते ना, और तुम्हें थोड़ा भी सर्कुलर मोशन आता ना, तो लोग बोलते सर ये जो सर अर्थ 2 है. पाई. हाँ, बोलो 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 बोलो. रिया, एब्सोल्युटली करेक्ट. सर यूनिफॉर्म सर्कल 2 पाई अपॉन टी करके फिर अपन वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा मुझे बताओ, फिर 2 पाई. कैलकुलेटेड इज इट अच्छा तूने कैलकुलेट किया क्या? ओमेगा? कैलकुलेटेड नहीं मतलब नो सर, will not calculate it. I am not able to explain it. Like we'll take it omega of earth. Or is it like? So can I say it covers one complete rotation in a constant time period? Yeah, sir, exactly. How much? How much time? How much time does it take to complete one rotation? Yes, sir. How much time does it take for one rotation? Does it take 365 days for one rotation? Yeah. हाँ या ना? Yes, sir. नहीं my dear, one rotation के लिए Sir, 24 6 one day एक दिन में रोटेट होता है ना 24 hours. शाम ने देखो अपना आंसर आ रहा. Sir, what do you? यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन चाहिए ना मुझे. तो rotation of the earth about its own axis is 24 hours, 86,400 seconds. और मुझे बताओ ओमेगा 2 पाई बाई टी कहाँ से आया, तुम्हें कहाँ से मिला ये फॉर्मूला? Sir, by take हाँ mummy. मम्मी ने बोला क्या? Sorry, sir. Sorry. नहीं, मम्मी ने बोला फॉर्मूला. नॉटी गर्ल रिया. No, sir. I was just excusing her. Your mom, she is good in physics. Excellent. No, क्या sir. बात है, क्या Actually, बात she was है. speaking, so just Very- I excused her. No. She's answering for you. Very good. I'm so No, happy. sir. Riya, you have good parents to support you in your studies also, but it's really thank you. No, Abhi to our parents help करना is fine enough, doesn't matter. That no, means sir, I'm not happy like that your that. parents, your parents are listening to the lectures also. It's very good. Okay, yeah. What she said it is omega is constant, students. ये जो है ना, ये कहाँ से आता है students? Motion is uniform circular motion है students. UCM है. अगर तुम्हें पता है तो सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म. स्टूडेंट्स, ओमेगा हम दो तरीके से लिखते हैं, मैंने बताया था स्टूडेंट्स. एक होता है डी थीटा बाई डी टी और एक होता है थीटा बाई टी. ये हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ये हो जाता है यूनिफॉर्म के लिए. यूनिफॉर्म कैसे? क्योंकि अगर बॉडी ए से शुरू होता है और पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है and it takes a constant time, so what theta travel is 2 pi. What is the time taken as Yes, periodic? sir. Omega is 2 pi by t या 2 pi f. यानी जब भी तुम्हें यूसीएम के बारे में बात करना है तो व्हाट इज ओमेगा 2 पाई बाई टी या 2 पाई. अभी यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला डाल दो. 2 पाई का वैल्यू क्या होगा? सर 2 पाई इज एक्चुअली 2 पाई बाई टी है ना इसका आंसर. तो 2 पाई बाई टी का मतलब 6.28 है ना, 3.14 एंड टाइम फॉर वन रोटेशन इज 86,400 सेकेंड्स. तो ये होगा रेडियन पर सेकेंड. तो आंसर होगा ये. तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ, sir. लेकिन रिया इट्स गुड. your mom, she's good in physics. Hats off to her. No, sir. I was to tell you this. I was not able to make you understand. I had Alright. did this before. That's why I have an idea of like. Okay, लेकिन उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है. मॉम ने आंसर दिया तो nothing wrong in it यार. She But must sir, be she happy. didn't answer.
ओके फाइन फाइन, मत बताना तो मत बताओ, छुपाना तो छुपाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके स्टूडेंट्स, now come back. Gravitational acceleration at a certain latitude स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है, और ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, g क्या है? g इज अ वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। r कितना है? सर रेडियस ऑफ द अर्थ। r की अगर तुम लोगे तो स्टूडेंट्स दिस इज 6400 किलोमीटर्स, है ना? तो जो 6.4 into 10⁻⁶ मीटर्स हो जाएगा। ओमेगा मैंने दे दिया, लैम्बडा इज द एंगल। ना सपोज अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स, अगर मैंने पॉइंट पी को, सपोज ये पॉइंट पी यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये पॉइंट पी यहाँ पे है, अगर मैंने पॉइंट पी को इक्वेटर पे ले लिया यहाँ पे, तो मुझे बताओ व्हाट इज एंगल लैम्बडा बिकम्स? तो तुम क्या बोलोगे? एट पोल्स कैन आई से लैम्बडा बिकम्स 90 डिग्री? हाँ स्टूडेंट्स, है ना? अगर Yes, मैं sir. पॉइंट पी को यहाँ पे ले तो लैम्बडा, तो व्हाट इज cos ऑफ 90? 0। तो व्हाट एग्जैक्टली एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट पोल्स? फॉर्मूला क्या होगा? ओनली जी। ये तो 0 हो जाएगा पूरा, आया ना स्टूडेंट्स? एग्रीड? हाँ स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? Sir, will you please explain this again, that pole one? In fact, सपोज रिया तुम यहाँ पे हो और तुम्हें पोल्स पे लेके गए, कोई नॉर्थ पोल पे लेके गए, तो वहां पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या है? किसी ने ये पूछा, तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? जी एट पोल्स, Yes. cos ऑफ 90 विल बी 0, है ना? लैम्बडा 90 हो जाएगा। Yes. तो व्हाट एग्जैक्टली जी एट पोल्स इज इक्वल टू जी माइनस Okay. 0। लेकिन अगर मैंने बॉडी को इक्वेटर पर ले लिया, एट इक्वेटर एट, Equator. तो लैम्बडा क्या बन जाएगा? 0 डिग्री, है ना? अगर ये पॉइंट पी को मैंने यहाँ पे ले लिया, तो देखो तुम्हारा ये जो रेडियस वेक्टर है, ये कम होते हुए 0 पे आ जाएगा। तो नाउ व्हाट इज cos ऑफ 0? 1। so what is my formula for g at equator? Students, what is the value of g at equator? It is g minus cos of 0 is 1 r omega square. देखो ये फॉर्मूला मेरा g of equator, but students, what is g? What is g? So g is nothing but g at poles. Can I substitute back over here? Yes. So g at equator is equal to g at poles minus r omega square. तो students मुझे बता सकते हो दोनों में से कहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है? पोल्स पे ज्यादा होगा या इक्वेटर पे ज्यादा होगा? तो इसको यहाँ पे ले लो, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो तुम क्या बोलोगे? सर जी एट पोल्स माइनस जी एट इक्वेटर is equal to r omega square. From here we come to conclusion that g of poles is always greater than g at equator. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. यानी स्टूडेंट्स sir. तुम लोगों ने स्कूल सेक्शन में पढ़ा होगा, ये जो ग्रेविटेशन है ना स्टूडेंट्स, क्लास 9 में ये है, सीबीएसई, एसएससी, इवन आईसीएसई स्टूडेंट्स आल्सो हैव इट। तो जब भी तुम लोगों ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा ना, तुम लोगों ने ये पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पोल्स पे हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो देखो इससे पता चलता है पोल्स इज ग्रेटर देन इक्वेटर बाय हाउ मच? हाउ मच इज द वैल्यू? r ओमेगा स्क्वायर। डू यू नो द वैल्यू ऑफ r? यस। डू यू नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा? यस। इसको स्क्वायर करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। अभी देखो इससे इससे हम कंक्लूड क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। Suppose if in case if I raise this question, okay? Suppose if I raise this question to let me put forward to Ravikant Rai. Ravikant Rai, are you there? Can you hear me? Ravikant Rai, are you there? Can you hear me? Ravikant Rai? अरे यार, okay. Any of y'all, either Yash or Tejas, any one of y'all, are you there? Who wants to answer? I'm throwing a question to y'all. Anyone? Anybody of y'all, out of Yash and Tejas? No one. Okay, who else? Ria, you want to try?
Sakshi, you want to try? Labdi is not there. So now left is Kashish. Kashish, you want to try? Sham is also there. Want to try? Nobody. So what's the question is? Okay, so now Riya has taken the initiative. Riya, question तुम्हारे लिए. रिया, ये सोचो कि तुम सोने का बिजनेस करते हो. ओके, गोल्ड का बिजनेस करते हो. समझ में आ रहा है? हाँ, सपोज इफ आई से यू आर अ गोल्ड मर्चेंट. यू आर अ गोल्ड मर्चेंट. रिया, Yes, sir. ये सोचो कि तुम त्रिभुवनदास भीम जी की इकलौती बेटी हो, है ना? पता सुना है त्रिभुवनदास भीम जी जवेरी? हाँ कि नहीं पर सुना है? हाँ रिया, you're a very good gold का merchant in that case. अभी सपोज मैं तुम्हें पूछूं करके तुम कहाँ पे गोल्ड को खरीदोगे और कहाँ पे बेचोगे? अगर तुम्हें चांस मिलता है तो कहाँ पे तुम खरीदी करोगे और कहाँ पे बेचोगे? If you're a gold merchant and if you want to make business. रिया, did you get the question? Question समझ में आया? Sir. मुझे बताओ रिया, गोल्ड कैसे खरीदते हैं? गोल्ड को खरीदने के लिए the gold which you buy, is it based on to dozen or is it based on to weight? Is it based on to its mass or it's based on to length or what exactly it is? Sir, हाँ, is mass. of course, mass के हिसाब से, है ना, weight के हिसाब से. अब मुझे बताओ, Yes, sir. अगर सपोज अगर तुम गोल्ड मर्चेंट हो तो तुम खरीदी कहाँ पे करोगे? खरीदना हो तो तुम्हें कम पैसे में खरीदना होगा, आया ना? Yes, sir. और बेचोगे तो वहां पे तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए. Yes, एग्री? sir. तो खरीदना भी ड्यू टू वेट है, बेचना भी ड्यू टू वेट है. एंड वेट इज गिवन बाय व्हाट फार्मूला? m into g. वेट इज गिवन बाय व्हाट फार्मूला? m into G. g. कहाँ पे कम है? g पोल्स पे कम है या इक्वेटर पे कम है? जल्दी बताओ. Equator. तो तुम खरीदी कहाँ पे करोगे? प्लेसेस एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे तुम कहाँ पे भी होगा ना, जितने भी तुम्हारे प्लेसेस है यहाँ पे इक्वेटर में जहाँ पे गोल्ड मिलता है वहां पे तुम खरीदोगे. और बेचोगे कहाँ पे? Yes. ये रीजन्स में तुम बेचोगे. प्रॉफिट ही प्रॉफिट. Okay, आया ना? sir. हाँ, sir. So students, what's the formula for gravitational acceleration at a certain latitude? Gravitational acceleration at a certain latitude is g minus r omega square cos square lambda. Lambda is at a certain latitude. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ? Yes, sir. ये formula ध्यान में रखना students, and these things also. Okay, students. Now I wanted to have to solve problem, students. Have a look on page number, students. Page number 91, students. You'll have page number 91 of your module, students. Exercise. Everyone has it, students? Do reply, please. Yes, sir. Okay. So I wanted to solve level 1 questions, students. First, very short answer questions, students. First, solve 1 to 4. And one who finishes first, 1 to 4, please raise your hand right now, fast. I'm giving you only 3 minutes for it, students. Page number 81, question number 1 to 4. Sorry, 91. Page number 91, question number 1 to 4 of the module. Solve it right now.
Yes, anyone? Yes, Sania from TV Bhatia. Are you there, Sania? Yes, sir. सानिया तुम आंसर कभी नहीं देते हो, ऐसे क्यों ऐसा कर रहे हो? हाँ सानिया, समझ में आ रहा है सानिया? Yes, sir. तो ट्राई करो ना आंसर, गलत तो गलत, डजंट मैटर, आंसर करना चाहिए ना। Yes, anyone getting the answer, students? Sania, Bervi, Prachi, Chanvi, Sakshi, Krishit, Paneri, Nivedita, Om, Prapti, कोई आंसर नहीं देता यार। I want to meet your parents. Since तुम्हारी कोई पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है कि नहीं होने वाली? हाँ स्टूडेंट्स? Sir, I'm doing. Oh, very good. Good answer. Shall we discuss?
I got one answer from Yash. Why, Yash, can you explain what is the reason for it? You said it no friction. How can you explain that? Sir, we are talking about page 91, no? Question Yeah, 1. please. Yes, So yes, it's yes. mentioned that an object moves without friction. So A body can only move in tangential direction when there is friction. a body can move in tangential direction only when there is. How do you come to that conclusion? कैसे conclude कर सकते हो? सर आपने ही पढ़ाया था ना? हाँ, लेकिन क्या बोला था मैंने? It's a concave surface. What are the directions of the normal and the tangential components? Normal and tangential components of the acceleration at the lowest point. Friends, देखो, what he's saying is absolutely correct. उसने क्या किया मालूम है? An object moves without friction. The object moves without friction along a concave surface. Okay. What are the directions of normal and tangential components of the acceleration at the lowest point? यानी तुम्हारा surface concave है, object lowest position पे है. Are you getting it? अगर यहाँ पे तुम what are the directions of normal and tangential components of the acceleration? तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा acceleration होगा? अगर body move भी कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा ये center है? Friends, everybody ध्यान से सुनना. ये बॉडी कैसे परफॉर्म कर रहा है सर? ये तो सर्कुलर मोशन अगर मूव करेगा तो भी तो सर्कुलर है ना. लेकिन यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं पॉसिबल, क्योंकि तुम्हें एक ही एक्सेलरेशन मिल रहा है. कौन सा एक्सेलरेशन मिल रहा है? एक्सेलरेशन रेडियल मिलेगा. क्या टैंजेंशियल मिलेगा एक्सेलरेशन? विल आई गेट एन एक्सेलरेशन टैंजेंशियल? हाँ स्टूडेंट्स, विल आई गेट एन एक्सेलरेशन टैंजेंशियल इन दिस केस? बस उन्होंने बोला है एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स. Students, अगर centripetal acceleration is the only acceleration which is directed from the body towards the center, are you getting it? तो उसके components से possible ही नहीं है. There is no tangential component, students. अगर body यहाँ पे होता तो शायद मैं इसको acceleration centripetal देता और उसमें एक acceleration ऐसे लेता, दूसरा acceleration ये होगा. Students, यहाँ पे tangential है ही नहीं तुम्हारा. Are you getting it? So for a body performing circular motion at the lowest position, students, it will be having only one acceleration, and that is radial acceleration, students. So there is no tangential acceleration at all. क्या ये clear है, students? Students, is it clear? Yes, sir. Okay. That's a theoretical question, students. Second question. Anybody can give me about the second one? A simple pendulum, a mass swing at the end of the string, swings back and forth in a circular arc. What is the direction of its acceleration at the end of the wing and at the midpoint? What is the direction of acceleration at the ends of the swing and at the midpoint? Yes, anybody? Students, pendulum swing कर रहा है.
At a particular time pendulum यहाँ पे है और कभी pendulum यहाँ पे है. Okay, so simple pendulum of mass m swings at the ends and swings back and forth in a circular arc. ये एक arc form में जा रहा है students. It's going on an arc. It's going on an arc form, students. The path is circular. What is the direction of acceleration at the ends of the swing? Ends of the string. अगर मैं end of the swing ले तो यहाँ पे कौन सा acceleration होगा सर? यहाँ पे tangential acceleration आएगा. यहाँ पे भी tangential आएगा. यहाँ पे भी tangential आ सकता है. Yes. तो ये tangential होगा at the end. At the midpoint. At the midpoint का मतलब क्या पूछा students? Students, at the midpoint. What is the direction of acceleration at the ends of the swing? Question mark. At the midpoint. Students. Students, at the midpoint, it will have only one acceleration, and that is acceleration centripetal. That means this is the midway. Students, जब भी बॉब स्विंग करेगा तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, लेकिन जब भी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, that is at mean or midway or midpoint, there is one force which is directed from the particle towards the center, that is force centripetal, and force centripetal is equal to mass into acceleration centripetal. तो मिड पॉइंट के लिए कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रिपेटल. एंड्स के लिए क्या होगा? टैंजेंशियल. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सेकंड क्वेश्चन. Yes, sir. Please students, please understand it very clearly. Any kind of confusion, any kind of discrepancy, right now you can stop and ask. Okay, please don't take it blindly. Sir, हाँ बोलो. sir, please can you explain me again? क्या बात है काजल? Where are you? Which branch are you from, काजल? Sir, Mira Road only. Very good, very good. अभी यहाँ पे काजल तुम रिप्लाई करो कि बॉब कौन से पाथ में मूव हो रहा है काजल? बॉब कौन से पाथ में मूव हो रहा है? बहुत सर sorry back and forth. बैक एंड फोर्थ यानी क्या हुआ? सर्कुलर दिया, तो सर्कुलर के लिए तुम्हें कौन सा फोर्स चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए? तुम्हें कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए? सेंट्रीपिटल सर. वेरी गुड. सेंट्रीपिटल पे होगा. और एंड्स ऑफ द बॉब के ऊपर कौन सा होगा? एट द एंड्स कौन सा होगा? एंड्स के ऊपर क्या होगा? टैंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा? हाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा. लेकिन जब भी बॉब मिड पॉइंट पे होगा, मिड वे भी कंसीडर डायरेक्टेड फ्रॉम पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर, तो वहां पे सिर्फ सेंट्रीपिटल आई कंसीडर which is directed from the midpoint of the bob towards the center is always acceleration centripetal. Okay? Yes sir. क्या बात है काजल, आज मामा बहुत खुश होगी ना, है ना, कि तुम बात कर रहे हो, समझ रहे हो? हाँ काजल, खुश होगी कि नहीं? हाँ सर. Very good. Hey, why she's laughing or what? Okay, fine. Next question. Third one. Anybody can give me answer for the third one? A passenger in a car rounding a sharp curve is thrown towards outside of the curve. A passenger in a car rounding a sharp curve is thrown towards the outside of the curve. What force throws him in this direction? Simple. बता सकता है? Centrifugal. Very good. Who's this? Yash has answered. Somebody else was also answering. Who was that? So me. Okay, Ria, what is your answer? So the same centrifugal force. Very good. Why? What's the reason behind it, Ria? So because so wait, I'll explain. Somebody's whispering. Yes, somebody's whispering next to you. पता चल गया. No, मुझे sir, whisper actually, सुनाई sir. दे रहा है. नहीं, answer is absolutely correct.
लेकिन मुझे बताओ जब ये कार सर्कुलर मोशन में जाएगी तो उस टाइम पे इज अ मोशन एक्सेलरेटेड? सॉरी सर। जब भी मोशन सर्कुलर पाथ में जा रही है और हाँ। सडन शिफ्ट होगा तो मोशन एक्सेलरेटेड होता है कि नहीं होता है? हाँ sir, that I'll explain you, right? Like if you're moving in a car, like I know the answer, but I'm not able to explain. That's the उस टाइम reason. पे उस टाइम पे क्या से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? हाँ. I get it. That means Yes. a radially outward force will be acting on the body. Agree? Yes. So there is an outward force we consider. क्योंकि तुम्हारी कार नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है रिया। Yes. तुम्हारी कार कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, Yeah. that's the Yes correct sir. answer. What she's given is the correct answer. Okay, Yes. next one, fourth one anybody can answer? Anyone for the fourth one? Yes, anyone? So Students in so your voice is not what? clear. Somebody was answering. Students, my voice is not clear or what? Can you hear me properly, students? Yes, so now it's better. My dear, over here the Wi-Fi is very clear. Okay, students, अब यहाँ पे ध्यान दो. In uniform circular motion, what is the average velocity for one revolution? Average velocity क्या है? And the average acceleration. See, students, acceleration is rate of change of velocity. And average velocity is what for one complete cycle? Average velocity is the total displacement covered by the body to the total time taken. And for one complete revolution, what is the total displacement, students? Yes, Zero. total displacement. So Absolutely correct. Zero. देखा श्याम ने आंसर दे दिया. तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगी, आया ना? हाँ sir. और वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो व्हाट चांसेस जीरो? स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes sir. All of y'all, all the students inside the group, is it clear? Sham has given the answer. Yash, what about you? Tejas, what Yes, about sir. you? Okay. Sanya, what about you? Sanya, you never reply. Sanya, reply करो जल्दी से. Answer पता चला? Yes, sir. Okay. Ravikant, Rakshanda, Prachi is halke, Riya also knows it. Om, Mayank, Krishit. Kashish is sleeping. Kashish is not there at all now. काजल समझ में आ रहा है काजल? Yes, sir. Okay. Alia, what about you, Alia? Dhruv, Bhairavi. Kashish, you are there, but you are not answering. You are lost. Okay, students, now let us complete the fill in the blank. Students, on page number 91 and 92 that I given to you as fill in the blank. So there are 5 fill in the blank. Please finish it off. I'm giving you just 3 minutes. Complete these blanks fast, 1 to 5, all of you. And one who finishes, please raise your hand.
Yash has given the first answer. I want all answers. Yash, fast. Okay, Riya has raised her hand. Riya has raised her hand. It seems that mom, she's helping a lot to her. Okay, Riya, chalo answer bolo sare. No, sir. Okay. Fine. Chalo, first one answer kya? Motion of a circular path with constant speed is? It Jaldi. would be uniform circular motion because it's oscillating. Is it like? Absolutely correct. Circular motion, and its motion Yes. is with constant speed. So it's uniform circular motion. Yes. Next one. Sir, this would be in the center of the circle Very good. because An you object only moves along said a that circular any path. object moves along a circular path with a constant. Yeah. Very good. Very good. The acceleration is always directed towards the center. सब मेरे को लग रहा है कोई तो भी है तुम्हारे नसीब में. It seems my mom is only there. No, Chalo, sir, actually, my third one. sister is talking with someone. Like she Okay, is on a fine. call. Yes, sir. यश तूने 2 पाई क्या? अच्छा, फिफ्थ वाले का आंसर बता. Fine, fine, fine. Okay. What about third one? Anybody can tell me the answer for the third one? Come on, fast. So it would be less than the centripetal force, which is like required for skidding. Of course, the force of friction should be less than the resultant. So skidding occurs while going in a circle when the maximum frictional force of a flat on a car is less than the net force required for it to revolve. So अगर frictional force कम हो जाता है as compared to the resultant कौन सा force होता है स्टूडेंट्स? कोई भी बॉडी जब भी सर्कुलर मोशन में जाता है स्टूडेंट्स, अभी देखो यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि यूसीएम है क्या. यहाँ पे स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन के अंदर कहाँ पे भी यूसीएम दिया है स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, No, sir. थर्ड क्वेश्चन नहीं. तो उसका Yes, sir. मतलब यहाँ पे एक फोर्स होगा तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होगा टैंजेंशियल. उसका हमें नेट मिलेगा ये, है ना. अभी ये कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर सपोज कोई कार है वो सर्कुलर मोशन में जाती है और वो स्किड होती है, तो स्किड होने से कौन उसको प्रिवेंट करता है? इट्स द फ्रिक्शन. स्टूडेंट्स, इट्स अ फ्रिक्शन व्हिच होल्ड्स अ कार. द फ्रिक्शन इज द वन व्हिच होल्ड्स अ कार. स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is less than the net force, then the body is going to skid. आया ना? Agreed? Net force का मतलब Yes, क्या sir. हुआ? And net force क्या है? Under root force tangential the whole square plus force centripetal the whole square. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Okay, हाँ, fine. sir. Come on. Next one. Fifth one. Can you give me the answer? Sorry, the fourth one. Anybody? Yes, Ria, you are answering. Fourth and fifth also answer. Sir, I know the fifth one, but fourth one I can't explain. Okay. Anybody? Fourth and fifth. Fifth one though, someone has answered also, but I wanted to explain it. It's an easy question. Fifth one, Q. A complete circle is how much? How many radians? Yes, it's 2 pi radian because it's equal to 360. बस 360 degree 2 pi radians. Answer 2 pi है. Fourth वाला क्या है? If an object moving along a circular path has its speed changing, students, अगर speed change होता है, then it has dash equal to the rate of change of speed. It has a tangential acceleration. अगर कोई बॉडी मूव होता है द सर्कुलर पाथ और उसका स्पीड गोज ऑन चेंजिंग, वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड टैंजेंशियल एक्सेलरेशन. वेलोसिटी अगर चेंज होता है टैंजेंशियली एट एवरी टाइम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस, तो दैट विल गिव मी व्हिच एक्सेलरेशन? टैंजेंशियल एक्सेलरेशन. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay, the fourth one is tangential acceleration. Now students, I want you to go for question number same page number 92. It's C and D. Students, now assertion and deletion, ये देखो students, ये जो fill in the blanks है assertion deletion multiple, ये कौन से type के questions मालूम है students? ये सारे questions ऐसे type के कहाँ पे पूछते हैं पता है? Advanced में पूछते हैं students, JEE Advanced के questions. Mains में कभी ऐसे questions नहीं पूछते हैं, NEET में भी ऐसे questions नहीं पूछते हैं.
एडवांस में। अभी देखो ये assertion and reason ने एक कोई स्टेटमेंट दिया है, वो तुम्हें बताना है कि ये सही है या गलत है। अगर ये सही है तो उसका जो रीजन दिया है क्या वो सही है या नहीं है, वो भी तुम्हें बताना है। Okay, so please try to solve your C part of it and then D. First solve C and get me the answer correctly. And one who knows it, please raise your hand. Page number 92, students. C part. Yes, anyone? Come on. Vishal, Sania. There were two Sakshi. One was from Mira Road, other one was for TV Bhatia. TV Bhatia, the Sakshi is there. Mira Road Sakshi is that girl, she has gone. Soham, Paneri, Om, Mayank, Krishit. These people who are not answering at all today also. Kashish, Kajal, Janvi, Dilsha, Dhruv, Bhairavi, Anju, Alia, another Dhruv. Sir, what is a turntable? A turntable is a rotating table. एक table है जो rotate हो रहा है ना? A turntable. अभी तो turntable के example में तो अगर देखेगा तो ऐसा सोचना कि तूने फैन है ना, सीलिंग फैन। हाँ, ये सोच के सीलिंग फैन के ऊपर तूने ब्लेड्स के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फैन को धीरे किया, तूने शुरू कर दिया है, वो वाला कंसेप्ट सोच के कर। Yes, sir. Alphabet A stands for assertion and alphabet R stands for reasoning for that assertion, please. Yes, students, anybody? Shall we discuss? Yes, sir. Students, अभी देखो फर्स्ट वाला, a coin is placed on a Yes, turntable. sir. मुझे बताओ, अगर सपोज तुमने एक फैन, ये सीलिंग फैन के बारे में रखो ना स्टूडेंट्स। एक सीलिंग फैन के ऊपर स्टूडेंट्स तुम लोग ने एक ऑब्जेक्ट रखा, फॉर एग्जांपल तुमने 5 रुपए का कॉइन रखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये सोचो। और पंखे को तुमने शुरू किया, द मोटर स्टार्टेड, है ना, तो उसका पहले स्पीड बढ़ेगा और उसका बाद स्पीड कांस्टेंट रहेगा। द कॉइन स्टार्ट्स मूविंग अलोंग विद द मूविंग टेबल। स्टूडेंट्स, वो कॉइन मूव करेगा अलोंग विद द मूविंग टेबल, यानी अलोंग विद द ब्लेड्स। तो विल इट मूव अलोंग विद इट? यस, इट विल गो ऑन मूविंग, दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन रीजन क्या होगा? कौन सा फोर्स होगा जो कॉइन को पकड़ के रख रहा है स्टूडेंट्स? विच फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉइन टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन? हाँ स्टूडेंट्स,
Sir, centripetal Centripetal. force. वेरी गुड, ये कौन आंसर दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, वेरी गुड काजल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। Sir, motor. मोटर नहीं, फ्रिक्शन 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 Friction force. फ्रिक्शन फ्रिक्शन की वजह से वो हो रहा है ना। अभी ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से सुना। मोटर तो उसको रोटेट कर रहा है, लेकिन अगर बाय चांस मैंने स्पीड और बढ़ा दिया तो क्या होगा? क्या वो कॉइन अभी 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 रहेगा ऊपर? नहीं, वो कॉइन उड़ के चला जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे तुमने उसका स्पीड बढ़ा दिया तो मोशन एक्सेलरेट कर दिया, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। हम लोग ने अभी एक प्रॉब्लम किया था, फ्रिक्शनल फोर्स अगर कम हो जाता है एज कंपेयर टू द नेट टू फोर्सेस, टैंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल, तो क्या होगा? बॉडी स्किड करेगा, तो यहाँ पे कॉइन टैंजेंशियली बाहर चला जाएगा। तो व्हाट इज द रीजन इनिशियली फॉर द कॉइन टू बी एंड परफॉर्म सर्कुलर मोशन? फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. The student C ka first one is A is a correct state to be considered, and R is a reason is also correct for it. What about second one? Anybody can give an answer for the second one and explain it? Read the question first. Anyone? Yes, anybody? Anyone? Since banking of road reduces the wear and tear of the tires of the vehicle to taking turn on curved roads. हाँ students? Students, अगर suppose मेरे को curve road में जाना है students, मुझे कार को curve road में घुमाना है consistently, तो कौन सा फोर्स चाहिए जो कार को सर्कुलर मोशन में रखता है? हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था? V इज इक्वल टू √μ/g। हाँ स्टूडेंट्स, विदाउट बैंकिंग वाला आया ना? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर। तो फ्रिक्शन की वजह से मूव हो रहा था, जैसे कॉइन मूव हो रहा है फैन के अंदर, फ्रिक्शन की वजह से होल्ड करके रखे, तो कार भी तो मूव हो रहा था फ्रिक्शन की वजह से। एग्रीड? यस। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? टायर्स और रोड के बीच में वेर एंड टेयर होना शुरू हो सकता था। अगर सपोज तुम वही कार को कंसिस्टेंटली रिवॉल्व करते हो उसी सर्कुलर ट्रैक में, तो टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन की वजह से तुम्हारे टायर्स वोर्न आउट हो जाते हैं। एग्रीड? हाँ सर। अभी बैंकिंग करने से हुआ क्या? बैंकिंग करने से हुआ क्या? तुम्हें फॉर्मूला क्या मिला? V इज इक्वल टू √RG tan थीटा इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो कहने से तुम्हारा फ्रिक्शन को एलिमिनेट कर दिया हम लोगों ने, यानी वेर एंड टेयर को बचा दिया। Read the statement. Banking on the road reduces wear and tear of the tires of the vehicle turn on the curved roads, of course. तो कौन सा रीजन है? रीजन क्या है? It's a component of the normal reaction force. Students, जब भी बैंकिंग करते हो तो उस टाइम पे कार यहाँ पे है, ये तुम्हारा mg जा रहा है, ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है स्टूडेंट्स, है ना? तो तुमने किसको रिजॉल्व किया? सर हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, ये थीटा है, आई गेटिंग इट? तो तुम्हें ये थीटा मिलेगा, तो ये थीटा है, ये n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg। ये n sin थीटा विल बी अ फोर्स ऑफ सेंट्रीपेटल। तभी जाके तुम लिखते हो, क्या लिखते हो? n sin थीटा बैलेंसेस व्हाट? सर n sin थीटा बैलेंसेस mv² by r। n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg। n will get cancel करने से tan theta is equal to v² by rg. So what is v? √rg tan theta. तो कौन सा फोर्स चाहिए? कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। See the reason.
component of the normal reaction of ground. Component of the normal reaction of the ground gives the necessary centripetal force to the tires passing over the banked road, which is otherwise to be provided by friction. अगर बैंकिंग नहीं करते थे, अगर बैंकिंग नहीं करते थे और कार को सिर्फ सर्कुलर मोशन में रखते थे, तो कौन सा फोर्स तुम्हें चाहिए था? फोर्स सेंट्रीपिटल वाज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग ने बैंकिंग नहीं किया था, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या रहा था? सर mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू व्हाट? म्यू इनटू n. mm will get cancelled. So what's the formula for v? Under root mu rg. Yes, sir. तो यहाँ पे कंपोनेंट आ रहा है. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे स्टूडेंट? जो कुछ भी मैंने सिखाया है स्टूडेंट्स, उसी के ऊपर बहुत कंसेप्शनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. स्टूडेंट्स, ये सब ध्यान में रखो. इसलिए जब भी तुम एग्जाम्स देते हो या प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हो या आगे का तुम करते हो, तो हमेशा तुम्हारा पीछे का पूरा बैकलॉग को रिवाइज करो. फॉर्मूलाज को कंसिस्टेंटली लर्निंग में रखो. यूनिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ. कन्वर्जन्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ. And then you read your problem very, very carefully with correct English. You'll be able to get it. Okay, क्या मैं इसको erase कर दूं students? Can I erase this? Students? Sir. Okay, now get me the answer for D. Match the column. चलो fast. ये easy है, ये सबको आना चाहिए students. Yes, anybody students? Anyone? Students? The strength was 27 students. Now 6 students have gone. See? Janvi has come back. पेरेंट्स मीटिंग होनी चाहिए, बस पूरे डिटेल्स के साथ में मैं आने वाला हूँ पेरेंट्स के सामने. जस्ट सी टू इट. पेरेंट्स, आई वांट पेरेंट्स टू बी कमिंग फॉर द मीटिंग. Then everything will be told to them. What is happening with them in the online sessions. Yes, students, master column.
A particle of mass m moving in a circular path of a constant radius r such that its centripetal acceleration is varying with time t. और सुन ने बोला है acceleration centripetal कैसे दिया उन्होंने, फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने, it varies with time t, और उन्होंने दिया है k square r t square, स्टूडेंट्स है ना। तो स्टूडेंट्स acceleration centripetal का फॉर्मूला क्या है, r ओमेगा स्क्वायर, ये तो तुम्हें पता है। तो तुम्हारे हिसाब से ओमेगा का ओमेगा क्या होगा, k इंटू टी। हाँ स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर। अभी तुम्हें पूछा है, अभी तुम्हें मैच करना है स्टूडेंट्स, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले अगर सपोज मैं पहला वाला सेंट्रीपिटल फोर्स करता हूँ स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, आया है ना। हाँ तो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, m इंटू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। ये कौन सा बता रहा है स्टूडेंट्स, कौन सा कॉलम 2 में बता रहा है स्टूडेंट्स, m के आर के स्क्वायर आर टी स्क्वायर आर। आर। अभी तो मुझे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। मुझे बताओ कॉलम 1 का a, कॉलम 2 में r, कौन से ऑप्शंस में दिखा रहा है। देखो ऑप्शन ए में a और r के साथ में कॉम्बिनेशन आ रहा है, b में भी आ रहा है, c में भी आ रहा है, d में नहीं आ रहा है। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स। यानी पहले मैंने वो बताया, यानी तुम्हारा आंसर अभी देखो, अभी तुम्हारा ऑप्शन डी रूल आउट हो गया स्टूडेंट। तुम्हारे सामने कितने आंसर्स थे पहले, 4 थे कि नहीं? तो जैसे तुमने 4 सेंटीमीटर का आंसर निकाला तो तुम्हारा ऑप्शन डी रूल आउट हो गया। अभी 3 आंसर्स बचे तुम्हारे सामने। यस सर। अभी देखो तुम्हें क्या सॉल्व करना है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। देखो बी का, ए में देखो बी का आंसर क्या है, पी, बी में भी बी का आंसर पी है, सी में भी बी का आंसर पी है। फिर ए में देखो सी का आंसर एस है, सी में सी का आंसर एस है, बी में सी का आंसर क्यू है। यानी तुम्हें सी और डी में आंसर निकालना स्टूडेंट्स। तो लेट अस फाइंड आउट फॉर सी का कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर, क्या पूछा है, पावर डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट्स पावर डिवाइडेड बाय व्हिच फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। हाँ सर। मुझे बताओ पावर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी पावर हो किया स्टूडेंट्स, चैप्टर वर्क एनर्जी पावर हो गया। यस सर। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू वेलोसिटी है कि नहीं है। हाँ हाँ अभी कोई बॉडी, अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये सेंटर है, तो मुझे बताओ v का डायरेक्शन किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ये कौन सा फोर्स है, क्योंकि उन्होंने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स। हेलो, मुझे पावर ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से चाहिए ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस तरफ जा रहा है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? देखो फोर्स और वेलोसिटी दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्रीज है कि नहीं है। हाँ हाँ स्टूडेंट, सर। हाँ ये सर। कौन सा प्रोडक्ट है, इज इट अ क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में तुम्हारा कंपोनेंट क्या आएगा, 4 सेंटीपिटल v cos थीटा एंड cos ऑफ 90। व्हाट इज cos ऑफ 90, 0। तो व्हाट इज माय आंसर, 0। 0 कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, 0 कौन सा ऑप्शन S। दिखा रहा है। देखो एक ए में देखो c इज s, यानी c बिलोंग्स टू s। तो a आंसर दिखा रहा है, हाँ सर ए करेक्ट दिखा रहा है। क्या b c बिलोंग्स टू s, नहीं, c इज गिवन टू s क्यू, b ऑप्शन में, तो b ऑप्शन भी रूल आउट हो गया। क्या सी ऑप्शन सी दिखा रहा है, सी बिलोंग्स टू एस, यस। यानी अभी तुम्हारे 4 में से 2 ऑप्शन सही है। अभी भी तुम्हें 2 ऑप्शन है, कौन सा है, ए और सी। स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है, पहले हम लोग ने डी को एलिमिनेट कर दिया, फिर तुम्हारा बी चला गया। अभी तुम्हें डिसाइड करना है ए और सी के बीच में, और वो तुम्हारा लास्ट आंसर डिसाइड करेगा। देखो लास्ट में क्या है, डी क्यू एंड डी एस। डी क्या है, पावर डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल फोर्स, पावर डिवाइडेड बाय व्हिच फोर्स, टेंजेंशियल Tangential फोर्स। force. आई गेटिंग इट। अभी मुझे ये बताओ, पावर डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल, अगर फोर्स टेंजेंशियल होगा तो क्या ये 0 आंसर आएगा, पावर ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स
तो कहने से force tangential into velocity tangential, क्या ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा? कहने से is it equal to 0 or not equal to 0? हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे force tangential and velocity are in the same direction. Cos of 0 will be equal to 1. Tangential force के बारे में बताया ना, पूछा है ना स्टूडेंट्स, getting it? हाँ सर। तो देखो तुम्हारा ऑप्शन सी देखो, d is equal to s, क्या d का आंसर s होना चाहिए, 0 आना चाहिए, और it should not be not equal to 0. Not equal to 0. तो my answer is A. देखा काजल कितनी स्मार्ट है. तो स्टूडेंट्स मास्टर कॉलम का आंसर क्या होगा? A. ऑप्शन इज A. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर, गॉट इट। Yes, sir. Okay. Now students, level 2 के question start solving it. Everybody please start solve level 2 के questions. Solve question number 1, question number 2, question number 3. पहले students ये वाला question करो which is slightly on the easier side students. Try to solve question number 1. Students question number 1 solve करो. Question number 3 solve करो. Question number 7 solve करो students. पहले 1, 3 और 7 solve करो. चलो fast. ये 3 के आंसर मुझे दे दो पहले. 1, 3 and 7. इसको erase कर दो students. Erase कर दो. Yes sir. Okay. Please solve 1, 3 and 7 students. कशिश तुमने आंसर देना बंद कर दिया जब से लब्धि नहीं आती है तब से. She is not there in the lecture also. She left the lecture. It seems like that. Come on, Anju, answer. Bhairavi, answer. Dhruv, Janvi, Ashish, answer. Mayank. ये सारे स्टूडेंट्स जो आंसर नहीं देते अभी उनका पेरेंट्स मीटिंग मेरे को रखना पड़ेगा. आई फील लाइक दैट. प्राची जाल के तुम कभी भी आंसर नहीं देते हो. अंधेरी ब्रांच. प्राची आयु दे. प्राची आयु दे. प्राची Rakshanda, are you there? You're not answering at all. Even Sakshi from DP Bhatia is not answering. I know why. Som is also not answering much at all. Vishal also never answers. Yes, anyone who wants to answer, students, please unmute yourself and answer fast. Sir, Yes. the first one would be 1, like taking one. angle. Okay, may I say option is A or option D? You're saying it. Option D, 1. Option D, 1. Fine. Yes. Reason क्या होगा बताओ? Sir, Read will the question first. Read the question. yes sir. Two cars having masses m1 and m2 moves in circle of radii r1 and r2 respectively. If they complete the circle in equal time, the ratio of their angular speed will be omega 1, omega 2, and the answer would be 1 because we'll take it like as angular velocity of the first car. Yes. So it would be omega 1. Omega 1 will take it as theta upon t. You said Okay. as 2 pi upon t. Yes. Just 2 before pi you upon said. t. Yes. And second one is also 2 pi upon t only. Yes, sir. And they've kept time constant. Yeah. So it would be क्या 1. बात है रिया.
जब से तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें हेल्प करना शुरू कर दिया तब से धनाधन आंसर दे रही हो. No, Students, sir, she's I have absolutely practiced. no, she's absolutely correct. स्टूडेंट्स उसने तो कितनी अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया. अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो सकता है? दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, डी थीटा बाई डी टी या थीटा बाई टी. लेकिन टाइम कांस्टेंट है, यानी मोशन पीरियोडिक है, यानी ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी लिखेंगे. लेकिन अगर रेशियो पूछेगा तो स्टूडेंट्स टाइम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल टाइम दिया है. 2 पाई भी कैंसिल होगा. रेशियो इज 1:1. आंसर इज 1. ऑप्शन इज डी. क्या बात है रिया. नेक्स्ट वन, कम ऑन, व्हिच वन आई टोल्ड यू, थर्ड एंड द सेवेंथ वन. Can anybody give me the answer for the third one and the seventh one? Yes, anyone? Third one? Sir, I don't know seventh one, but can I explain the third one? Yeah. I'm not sure about. Third one, Riya, you're doing an IIT question 1987 का. क्या बात है. Read करो. Yes, sir. Read the question. Riya, you are answering now? Yes, sir. Sir, can I? Read I'm reading the करना. question. Select the correct alternative. A particle is acted upon by a force of constant magnitude, which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a plane. It follows that. So, would the answer would be kinetic energy? Very good. I mean, I'm not sure. I explained, but not sure about that. Yeah, absolutely correct. कैसे पता चला कि kinetic energy is constant? Because this the work done is 0, and so magnitude will also not change, and kinetic energy is like the formula is half mv square, right? And it is constant. It always be constant. So would it be? First of all, is the path circular? Yes. कैसे पता चलेगा circular? तो तुम बोलोगे force and velocity are mutually perpendicular. हाँ sir. Okay. तो students ध्यान से सुनना. Select the correct alternative. A particle is acted upon by a force of constant magnitude. Students, force of which magnitude? Constant. कौन सा force के बारे में बात कर रहा है? Which is always perpendicular to the velocity of the particle. कौन सा force के बारे में बात कर रहा है? ये velocity of the particle ऐसे जा रहा है students. ये velocity ऐसे जा रहा है. Agreed? ये force इस तरफ जा रहा है. Of constant magnitude. तो कौन से force के बारे में बात कर रहा है? ये center है. तो कहना है ये अगर constant magnitude है, velocity इस तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये path circular होगा, क्योंकि dot product दोनों का 0 होता है. अभी हम लोग ने प्रूव किया था. पावर वो 0, फोर्स सेंटीमीटर के हिसाब से वो 0, यानी मोशन तो सर्कुलर है. लेकिन कांस्टेंट कैसे मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर? हाफ एम वी स्क्वायर. यानी ये मुझे कभी मिलेगा जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. कैसे पता चलेगा वेलोसिटी कांस्टेंट है? स्टूडेंट्स, फोर्स सेंटीमीटर इज कांस्टेंट. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर फोर्स सेंटीमीटर? देयर आर 3 formulas स्टूडेंट्स. एम आर ओमेगा स्क्वायर.
mv स्क्वायर बाय r mv mv omega. यहाँ पे कौन सा फोर्स लोगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे तीनों में से कौन सा एक्सप्रेशन लोगे तुम्हारा ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आने के लिए? v आता है ना, तो ये लोगे तुम। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ सर। अभी मुझे बताओ, अगर फोर्स कांस्टेंट है, बॉडी का मास कांस्टेंट है, बॉडी का रेडियस कांस्टेंट है, तो कैन आई से पूरी वैल्यू f into r upon m is a constant, so v is also constant. Yes sir. तो काइनेटिक एनर्जी has to be constant. तो मोशन इज UCM. समझ में आया स्टूडेंट्स? हाँ सर समझा। अभी समझी रिया? देखा नहीं तो? सर, just I'm answering you. Okay, fine. Okay, go to the next one I told you on. Can I erase this? इसको erase कर दूं? Can I erase this, students? इसको erase कर Yes दूं मैं? sir. Okay. Come on, anybody? The next one. Now see, the number of students has reduced to 17, 18 students, 17 students. Anju is now at the doctor. Very good. सब लोग निकलो. This is what the problem is. मुझे मिलने दो parents से. I'll speak to them. Yes, I told you to go to the 7th one. Sir, I have given answer for the 4th one, so ignore it. Yes, anybody? 7th one wants to answer? When the displacement of the bob is less than maximum, its acceleration vector is correctly shown. Students, एक simple pendulum दिया है जो oscillate होता है without damping. Without damping का मतलब its motion is periodic, it goes on. Motion damping दी है, that means amplitude remains constant. यानी हमेशा pendulum क्या कर रहा है? हमेशा pendulum oscillate करेगा और वो equal distance cover कर रहा है on extremes. ये है. Agree? This is the path we consider. Now they've given to you is when the displacement of the bob is less than maximum. Students, अगर displacement of the bob यानी theta is small, the displacement of the bob is theta is small, and ये linear हो जाएगा students. Okay. This bob is less than maximum. Its acceleration vector is correctly shown. Students, मुझे बताओ acceleration vector कौन सा होगा? हाँ students. यानी कौन सा acceleration में बात किया मालूम है?
तो जब भी बॉब ऑसिलेट करता है, थीटा स्मॉल है, तो ये देखो ये इट इज एट अ पार्ट ऑफ एन आर्क, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? तो बोले सर ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है। यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सर एक्सेलरेशन टैंजेंशियल होगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है फ्रॉम द बॉब टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मैं इसको टैंजेंशियल एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ जा रहा है? तो सर ये वेक्टर को शिफ्ट कर दो पैरेलल, देखो टेल है, रिजल्टेंट इस तरफ जा रहा है। स्टूडेंट्स तुम्हें पूछा एक्सेलरेशन नेट का डायरेक्शन, हेलो कौन से डायग्राम में तुम्हें ये दिया है, स्ट्रिंग दिया है, बॉब दिया है और एक एक्सेलरेशन ऐसा दिखाया है स्टूडेंट्स, कौन से डायग्राम में दिया है? ये तो तुम्हारा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होगा। हाँ स्टूडेंट्स, ये कौन सा डायग्राम है, कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है इसे? Is C. it A, is it B, is C it C में or D? C। देखो ये कौन सा एक्सेलरेशन हो रहा है? नेट एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स, ये वाला एक्सेलरेशन दिखा रहा है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay, the net acceleration for a bob which is performing. Hope you're getting it correct students, all of you all. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Sir, हाँ will you बोलो। explain it again, please? ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये कौन सा एक्सेलरेशन है बोलो? Sir, your voice was not clear. That's why I asked you for. My voice is, students, my voice was breaking or what? Sir, it's on my side. Network issue. Okay, और ये कौन सा एक्सेलरेशन मैं बता ना, फ्रॉम द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर, ये कौन सा एक्सेलरेशन है बता सकते हो? Centripetal. हाँ, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? अलोंग द टैंजेंट, है ना? बॉब को वापस हाँ. तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा। Yes, sir. तो तुम्हारे जो डायग्राम में जो एक्सेलरेशन बता है ना, वो नेट एक्सेलरेशन दिखता है। ऑप्शंस में जो एक्सेलरेशन दिखा है ना वो नेट। तो कौन सा डायग्राम इससे मैच हो रहा है? इससे मैच कौन सा डायग्राम हो रहा है? ए, बी, सी या डी? Sir, C. यस, ऑलराइट। Okay, sir. So in the next lecture we'll be continuing further, and next lecture we'll continue with the problems also. Okay, students, and problem gets finished, we'll be starting with the new chapter, system of particles. Okay, students. Okay, sir. Bye. Take care. Yes. Thank you, sir. Bye, sir. Bye.